नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। जैसे कि आप सबने देखा होगा, निफ्टी ने फाइनली मार्च का लो जो था वो ब्रेक किया है। मार्च का लो ब्रेक करने में काफी टाइम लगाया है, बट दैट इज फाइनली हैपेंड। तो सवाल ये है कि अब कहाँ जा रहे हैं। लास्ट वीडियो जो हमने शेयर किया था इंडेक्स चर्चा, उसका टॉपिक था न्यू लो इन जून सीरीज। राइट, ये था हमारा जून फोरकास्ट, जिसमें आनंद और मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि जून सीरीज में ही हम एक नया लो बनाए। इफ आई रिमेम्बर वेल, आई थिंक आनंद सेड द प्रोबेबिलिटी इज 90%। सो ये काम तो हो गया है। आई नो लोगों के पोर्टफोलियोज लाल लाल हो गए हैं। मेरे भी काफी स्टॉक्स रेड हो गए हैं। सो it's important that we separate our trading from our long-term investing. तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज नेगेटिव हो सकते हैं, बट ट्रेडिंग में फिर भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं। दैट्स द वे वी नीड टू सेपरेट दीज टू थिंग्स। और जिन्होंने भी हमारे पिछले दो ऑप्शंस चर्चा वीडियोस देखा होगा, आई होप दे हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। ये था जून 2022 पोजिशनल ट्रेड आइडिया जो मैंने शेयर किया था। कोटक महिंद्रा बैंक का 1800 पुट। जब ये वीडियो बनाया था तो आई थिंक इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 32 रुपीज। और मैंने कहा था 15 रुपीज के आसपास हम स्टॉप लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दिस पुट goes above 100. This is what I said. I think ये पूरा जो है बिल्कुल as expected, as predicted हो गया है। I hope some of you guys made use of this. Now let's get back to the main index, which is Nifty. हर बार की तरह let's begin with the big picture, the larger picture of Nifty. ये monthly chart है and big round number 15,000 जो है उसके पास आ गया है Nifty. The low was 15,183, so about 183 points रह गए हैं big round number के लिए. So technically, we are near an important level. बट जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली राउंड नंबर पर रुके, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स का व्हाट यू कॉल डिविएशन चलता है। जैसे कि यहाँ पे 18,000 बिग राउंड नंबर था, बट हम 18,600 गए थे। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड वर्थ नोटिसिंग इज दैट मंथली लेवल पे भी हम काफी टाइम बाद 20 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हैं। ये देखिए, एंड दैट हैपेंड आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मंथ्स के बाद हुआ। अगर आप हमारे पहले के वीडियोस देखोगे लास्ट ईयर के, उसमें इस बात के बारे में मैंने एक डिस्कशन किया था कि लॉन्गेस्ट रैली ऑफ द मार्केट अबव द 20 मंथ मूविंग एवरेज कितने महीनों तक रहा है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 मंथ्स ही था वो।
I have to go back and look for that study that I did, but हाँ approximately इतने महीने के तो थे. So time wise I think Nifty gave us enough opportunity to evaluate our portfolios and adjust and readjust. अभी भी कोई बेयर लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट की कहानी नहीं है. अगर कोई ये सब बता रहा है तो बिल्कुल मत सुनना उनकी बात. क्योंकि अगर मैं कोरोना बॉटम से भी देखता हूँ, राइट, तो रिट्रेसमेंट अभी तक 23.6% से 38.2% के बीच में ही है, which is generally shallow retracement. So पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, रिट्रेस और हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है. So let's go step by step and see what is happening. अगर एलियट वेव प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखते हैं और अगर ये मानते हैं कि यहाँ से ये जो लेग है पूरा, ये अगर एक बहुत बड़ा रोमन 1 है, which means that this wave itself by itself is not third wave, but this wave is the first of third, right? क्योंकि wave 3 सब डिवाइड हो सकता है. अगर ऐसा है और कर्नों का बॉटम अगर रोमन 2 था इसी 3 के अंदर, तो सवाल ये है कि क्या ये 3 था? नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 इतना छोटा नहीं हो सकता. 1 बहुत लंबा है, right? The rule says 3 cannot be the shortest wave of an impulse. शॉर्टेस्ट वेव ऑफ एन इम्पल्स है या नहीं वो तो अभी नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि फोर्थ के बाद अगर फिफ्थ आया एंड सपोज फिफ्थ इतना लंबा नहीं है, ठीक है, मे बी 2 years का रैली है, 2024 में से टॉप आउट हो गया, देन व्हाट हैपेंस इज थर्ड इज डेफिनेटली शॉर्टर देन 1, बट थर्ड इज नॉट द शॉर्टेस्ट. तो उस हिसाब से ये काउंट ठीक हो सकता है. इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट, क्योंकि अभी जब तक पूरा प्राइस एक्शन अपने आंखों के सामने अनफोल्ड नहीं होता है, सब बताना मुश्किल है. So for now, we can assume that this is 1 circle, 2 circle, 3 circle, 4 circle, and 5 circle, for example, right? Worst case scenario. Let's assume कि चलो ऐसा है कहानी. Just for discussion's sake, let me put 5 here. ठीक है. तो क्या होगा? हाँ, तो जरूर डीपर रिट्रेसमेंट आ सकता है. Sorry, I don't know why I'm saying replacement. अगर ये वेव काउंट है तो जरूर डीपर रिट्रेसमेंट आ सकता है. बट क्या सही में ऐसा होगा? लेट्स डाइव डीपर एंड सी. स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि एक पिच फोक मैंने ड्रॉ किया है, राइट? तो अगर कोई डीपर करेक्शन आता भी है, so the market should come and test this, the top of the pitchfork. So that is around this point पे approximately. चलो अगर it will take a couple of months to get there, for example. तो हाँ 14,000 के आसपास है, which is also 14,366, which is a 38.2% retracement of this entire rally from 2020 bottom. अगर हम वीकली स्केल पर जाते हैं, वेरी क्लियरली अगर इंटरनल वेव्स में काउंट करूं, वेरी क्लियरली आई कैन काउंट 1 2 3 4 5. सो यस, एक इम्पल्स वेव खत्म हो गया तो ये करेक्टिव वेव. उसके अलावा जिन्होंने भी हमारे पिछले कुछ वीडियोस देखा होगा, उनको याद होगा ये मैंने डिस्कस किया था कि हिस्टोरिकली ऐसे ही कॉम्प्लेक्स करेक्शंस 2 बार पहले भी हो चुका है.
2010 to 11 and 15 to 16 एंड अभी भी हो रहा है. सो अगर इनके मुकाबले देखा जाए तो क्या करेक्शन खत्म हुआ है? दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव. सो लेट्स गो अ बिट क्लोज एंड सी. So this is the 2010 to 11 correction. आप यहाँ देखिए bottom of the box में. This correction was about 28.5%. 28.5%. एंड आप देखो ये भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन था. ABC, W, X, ABC, X, ABC ऐसे चल रहा है. 28.5%. उसका अगला करेक्शन जो 2015-16 में आया था वो था 25%. पहले से थोड़ा कम. अभी कहाँ है हम? अभी तक हमने करेक्ट किया है 18.4%. तो पिछले दोनों करेक्शंस के मुकाबले अभी तक कम करेक्शन हुआ है. बट सवाल ये है कि क्या करेक्शन खत्म हो गया और इज देयर मोर टू गो, राइट? One way to look at it is, has the price come to this expanding channel bottom? You can clearly see कि अभी थोड़ा है 200-300 पॉइंट का गेम तो दिख रहा है यहाँ पे. इन दोनों करेक्शंस में भी आप देखोगे कि एक्चुअल बॉटम जो बना था वो थोड़ा दूर ही रह गया था चैनल से. हाँ, बट यहाँ पे it connected, it actually touched the channel bottom. So 50-50 है कि लगेगा या नहीं लगेगा. But what is very important to observe, and I'm sure some of you who have a keen eye उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ जब प्राइस करेक्ट हुआ था, प्राइस came down to this pink curved line which is our 200 week moving average. In fact यहाँ पे ब्रीच भी किया था इसने एक बार. But it quickly climbed above it, came down again, touched it and then started going up. This correction may be price came down, touched the 200 week moving average and then no looking back. तो अभी कहाँ है हम? अभी बहुत दूर है. इसको देख के तो भाई डेफिनेटली फट जाएगी सबकी. Because the 200 week moving average is at about 13,170. That is another 2,000 plus points away. तो क्या प्राइस यहाँ तक करेक्ट हो सकता है? मुझे तो नहीं पता. But patterns tend to repeat, so maybe it can. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो impulse wave है जब खत्म हो गया है 1 2 3 4 5, there has to be a corrective wave which is ABC, right? Big waves में ABC दो waves होते हैं. बट अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा है. मतलब उसी ABC के अंदर खिच चल रही है. So technically, an impulse wave can be retraced, deep, in the sense it can be retraced by 50% or 61.8%, right? Sometimes even deeper it happens. Right? So keeping the bull market structure intact, the price can, correct back to the 20-week moving average. It is possible. Okay. But abhi ke liye, let's keep this this channel structure जहाँ पे I connected these two lows, and let's hope that it stops here. There are a couple of reasons why it may stop here. One, it is in the area of the previous wave 4. Right? Typically हमने देखा है कि corrections जो होते हैं bull market में, they tend to come back to the previous wave 4, which is also coinciding with 38.2% of
this entire rise, which is 14,366. So अगर वहां तक आता है, हो सकता है meanwhile this moving average also keeps climbing up. However, I would also want you to pay attention to one more aspect of these corrections. हाँ जी, तो अभी हमने एक्स वेव लगा के हम नीचे आ गए हैं currently, right? So the question to ask is, are we here? हम यहाँ पहुंचे हैं अभी, या हम यहाँ पहुंचे हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि क्विक बाउंस बैक एंड देन डू अ न्यू लो, राइट? लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. यहाँ पे भी एक्स वेव लगा के नीचे आया है, राइट? एंड देन देयर वाज दिस लिटिल बाउंस एंड देन इट वेंट बैक डाउनवर्ड्स. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है पहले वाले से. सो अभी हम कहाँ पर हैं? ये देखिए, हमने एक्स वेव लगाया, बड़ा वाला, राइट? उसके बाद नीचे आए, बाउंस हुआ था, right? And now we are moving downwards. So to me, it looks like we are probably near the end of the correction. ऐसा लग रहा है मुझे. अब इसमें ये देखना होगा कि in this entire complex correction, everything is three waves, right? A, B, C. तो यहाँ W लगा दिया हमने, A, B, C. X लगा दिया, A, B, C. Right? फिर से एक और A, B, C. So ये A, B, C के combinations में चलता रहता है. अब यहाँ अगर हम देखेंगे, so this is like one wave, two wave, three wave, four wave, five wave. So one way to count it is, you know, what if this whole thing was just A, B, C, X, and you know, maybe just another A, B, C. तो ये जो Elliott wave confusion है ना, ये रहता है, ठीक है? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा Elliott wave का तोप है, तो why are you not being certain about it? It's tough for anyone to be absolutely certain because there could be multiple possibilities when a correction is unfolding. And ये complex corrections को complex इसलिए बोलते हैं क्योंकि complex है वो. So हमें क्या करना होगा? तीन चार चीजों को फैक्टर्स को कंसिडर करके सोचना होगा. एक है प्योर प्राइस एक्शन, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर, एलियट वेव स्ट्रक्चर, आनंद का फेवरेट सब्जेक्ट विच इज वॉल्यूम के हिसाब से. तो हम तीन चार चीजों को कंबाइन करके भी देख सकते हैं. एंड अगर हम और डाउन द स्केल जाएं, सपोज आई गो डाउन टू द डेली स्केल, दिस इज डेली स्केल, तो भी हम देख सकते हैं कि ये पूरा टाइम वेस्ट जो हुआ था जून के महीने में, it got resolved with a huge gap down, right? And it is possible to count 5 waves down from this high, right? So I can count this as 1, 2, this is all part of 3, 4, 5, right? So 5 waves खत्म हो गए, मतलब जब भी खत्म हो जाएंगे, या तो खत्म हो गया फ्राइडे को, या हो सकता है मंडे को थोड़ा और नीचे डिप मारे, देन उसके बाद एक काउंटर ट्रेंड बाउंस तो बनता है. वेदर दी मेजर करेक्शन इज फिनिश्ड और नॉट, वो हमें थोड़ा टाइम लगेगा पता होने में, बट वी आर नियर अबाउट देयर इन टर्म्स ऑफ at least seeing a counter trend rally. If I go further down into the hourly chart, again I can see a clear impulse. यहाँ पे पूरा 1 2 3 4 5 देखेंगे, ABC 2, this whole thing looks like wave 3, wave 4 and wave 5.
तो एक लेवल का करेक्टिव वेव डन है मोर और लेस, एंड अगेन रिपीटिंग, वी आर नियर द प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन. ये जो पिछले साल का 2 महीने का जो कंसोलिडेशन जोन था, उसको ब्रेक करने में निफ्टी ने काफी टाइम लगाया. लेट मी डिलीट दिस फॉर नाउ. ये देखिए, इस जोन को ब्रेक करने में इधर कौन सा महीना था ये, उस महीने में टच किया, it bounced all the way back, then again here, again, and then it dropped here. This is almost like आप दीवार कूदना चाहते हो, तो आप भाग के आते हो, you reach the top of the wall, but then you don't have enough momentum, तो आप उतर जाते हो, right, and you go back a few more steps and again start running. You try again, it didn't work out, you again went back. So now maybe आपने डिस्टेंस नहीं, बट अपना रन करने का एनर्जी लेवल बढ़ाया है, and then you actually go over the wall. So this is what has happened here, right? तो ये की लेवल ब्रेक तो कर दिया है इसने, but there is also this huge consolidation zone, which is our next support. ये था मार्च 2021 का, right? और ये था जून जुलाई 2021 का. So we are again in June, July. So we are back to this zone. So this is like a fortress. ये किला काफी स्ट्रॉन्ग है, ये इतनी जल्दी से टूटेगा नहीं मेरे हिसाब से. So that is where we are at. The other interesting thing I noticed was I just switch on volumes. Spot के volumes है. Of course, Anand says always look at futures volumes because futures is the instrument that everybody trades. Spot को तो हम trade नहीं कर सकते हैं. But फिर भी ये एक चीज मैंने notice किया, this huge volume spike that happened on 31st of May. Right now, 31st of May, was it expiry day? No, it was not. It was a Tuesday, right? But for some reason, there were huge volumes here, which is this candle. ये doji type जो candle था, right? ये वाला. उसके बाद बस हल्का सा market ऊपर गया and then it came down. So the question is, was this like, a selling climax, or did someone load up a lot of positions? And if big hands have loaded up big positions around here, बहुत नीचे जाने नहीं देंगे इतनी जल्दी से. But this is all speculation. I don't know. Let's go to Nifty Futures. Nifty Futures में बहुत टाइम बाद last 2 days, which is Thursday and Friday, काफी huge volumes आए हैं Nifty Futures में. These volumes on 16th June were higher than these volumes on 7th March. Right? 7th March पे जो volumes यहाँ आए थे, उससे ज्यादा के volumes थे. Now, how do we interpret this? Is it that some big hands which went long here after a sustained downtrend, did they exit here? कि वह अब तो अपने purchase price से भी नीचे आ गया है. Or did big hands which bought here have also added more positions here? I don't know. Right? But ये इतने बड़े-बड़े volumes आप और मेरे जैसे traders तो generate नहीं किया होगा हमने. It must be some big guys with deep pockets who generated that kind of volumes. Keeping that speculation aside, अभी आने वाले हफ्ते के लिए हमारे लिए important क्या है? Because of these huge volumes, and it's a volume of 2 days, so I have marked the high of Thursday and the low of Friday.
अब ये जोन जो है 15,865 एंड 15,211, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. Price going below this low, on the back of these huge volumes is bad. It just means that more selling has happened and the downtrend will continue. And if over the next few days price अगर घूम जाता है and अगर 15,865 के ऊपर चलने लगता है, so then you can be sure that this is a serious bottom, at least for the medium term. When I say medium term, maybe for a few months, 3 to 6 months के लिए at least. By that logic, the rally can be pretty good to 16, 17,000 levels. Trading perspective से 1000 point काफी है, right? And as long as price stays within this zone, it's neither here nor there. Avoid kind of zone. हाँ, 600 पॉइंट का रेंज जरूर है, इसमें कुछ खेलने में मजा आता है तो खेल लो, बट मैं तो अवॉइड करूंगा, राइट. Let's also look at other indices for a broader perspective. Bank Nifty में भी वही है. ये पहले भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मार्च लो से जो है लगता है कि एक इम्पल्स वेव अब खत्म हो गया था. 42,000 बिग ग्राउंड नंबर से नीचे आ गया है. मंथली स्केल पे देखें, it is also well below 20-month moving average. So price could be heading to the 40-month moving average, or at least to the big round number 31,500. राइट, पहले भी मार्च में इसने ट्राई मारा था, हो सकता है इस बार एक्चुअली प्रॉपरली अचीव कर ले. राइट, sorry, this trend line has no meaning, I'm deleting it. Also, the top of this wave is like could be a good support. So हो सकता है बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट और नीचे आए. And if I go down the scale and see on daily scale, तो ये भी स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ है निफ्टी की तरह. ABCX, maybe ABM. C is about to finish. It is also coming back to the previous waveform, right? And unlike Nifty, it is bit of a channel structure. Of course, this channel can be debated, but अगर हम इस चैनल को डिस्काउंट भी कर दें तो स्ट्रक्चर, करेक्टिव स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स, सेम निफ्टी की तरह ही है more or less. Quickly I'll go through the larger markets, which is Nifty 500, right? Same structure like Nifty, approaching a big round number 12,500, जो 500 पॉइंट की दूरी पर है, राइट. ये भी 20-month मूविंग एवरेज के नीचे है, राइट. सिमिलर लेवलिंग हो सकता है कि चैनल बॉटम के आसपास रुक जाए. लेट्स सी. देन लेट्स गो टू मिड कैप फर्स्ट, राइट. सिमिलर स्ट्रक्चर, मंथली स्केल पे 20-month मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है. I forgot to put the trend line. इसका जो एंगल ऑफ करेक्शन है थोड़ा स्टीप लग रहा है कंपैरिजन. Let's see. Then let's go to small cap. स्मॉल कैप में डैमेज ज्यादा है, राइट. इसका रैली भी ज्यादा होता है और डैमेज भी ज्यादा होता है. वेरी वेल बिलो द 20-month मूविंग एवरेज. इनफैक्ट इस पिच बुक का मिड पॉइंट भी इसमें ब्रीच कर दिया. सो मे बी इट इज हेडिंग फॉर अ 50 or 61.8% retracement kind of thing. Possible. इसका एंगल तो और भी ज्यादा स्टीप है,
This is something that you can always keep in mind, that the correction in small caps is always steeper, way steeper than the major index. ये हमेशा ही होता है. आप खुद अपने चार्ट स्टडी कर लीजिए, आपको दिखेगा ये. Right. And if we come back to metals, ये देखिए metals index 38.2% रिट्रेस कर चुका है. IT इसमें काफी डैमेज हो रहा है. इसमें थोड़ा लेबलिंग मैं नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ दिस ग्रुपेड चार्ट जो मैं ठीक नहीं कर पाता हूँ. बट अगेन इट्स नियर दिस कंसोलिडेशन जोन. PSU Banks, these have been fine actually. इनमें बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आया है. But it's a bit hard to read this structure. Maybe ये भी complex correction है. ये wave count मेरे को ठीक करना पड़ेगा. But it is well within this huge high volume zone. And it is holding the 200-week moving average. So that's a good sign. Pharma ने काफी disappoint किया है because जब ये इसके ऊपर चला गया तो I had big hopes that this will rally, but नीचे आ गया है. So it is nearing the 40-month moving average. So, and it's also closer to the previous wave 4. ये देखो, right? So maybe it will fall up, a few hundred points more and should turn around. So कुल मिलाकर कहानी ये है कि major indices have corrected deeply, most of them, and they're all nearing their previous wave 4s or 40-month moving averages, etc., etc. So very soon we could have a confirmation on a reversal. So थोड़ा सा patience दिखाते हैं, and let's look at some great trading opportunities. जैसे पिछले महीने VDL पुट था, जून के महीने में कोटक महिंद्रा का पुट था, राइट. जरूरी नहीं है कि हम इंडेक्स पे ही ट्रेड करें. Coming back to Nifty, please remember this zone of 15,865 and 15,200 roughly. We can take major trading positions only when the index moves either above or below this zone. Till then, stay light, stay safe. I hope this analysis has been helpful. Please leave your comments and do share this video with your friends, trading circles, and see you on the next video.